Once again, I welcome all the eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar. और इवनिंग वेबिनार ओपन हुआ है ये डिक्लेयर करते हो सबको स्वागत करते हो नमस्कार ओवर टू पवन जी थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू वेरी मच मैं अतुल देसाई जी का भी स्वागत करता हूं मैं आदरणीय अग्निहोत्री सर से ब्रीफ प्रियम्बल की प्रार्थना करता हूं थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी नमस्कार जैसा कि आप अभी कही रहे थे बिल्कुल सही बात है हम लोग अनंत यात्रा पर चल रहे हैं और काउंटिंग नंबर तो रोज का रोज बढ़ता ही है और ये सब हमारे सभी सहयोगियों का साथियों का पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत सहयोग है। आज हम लोग 700 और 89 और 790 वेबिनार के लेके उपस्थित हुए हैं। हम आज के सभी गेस्ट स्पीकर्स का बहुत ज़्यादा स्वागत भी करते हैं और इस विश्वास के साथ में कि जो हमारे देश में जिस सेक्टर में ये डिजीज फैलती है स्पेशली सिकल सेल एनीमिया वहाँ पे जो क्राइसिस बनती है वहाँ पे क्या रेमेडी होती है। सही आपने कहा कि ब्लड डोनेशन एक इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट समाधान के तौर पर रख सकते हैं क्योंकि थैलेसीमिया हो या इस टाइप के कोई भी प्लास्टिक एनीमिया हो या ऐसा कुछ भी है तो हमें हमेशा जो सपोर्ट चाहिए होता है ब्लड के बैकअप अवेलेबिलिटी का वो तो एक चीज़ है। लेकिन छत्तीसगढ़ बिहार उड़ीसा ये उस साइड के क्षेत्र जहाँ पर ये स्पेशली सिकल सेल एनीमिया एक समटाइम्स बिल्कुल एपिडेमिक टाइप बन जाता है कि नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होते हैं और समाधान इतना नहीं होता। तो आज हमारे गेस्ट जो स्पीकर आए हुए हैं वो बहुत ही गहराई से इस सब के बारे में स्पेशली मैनेजमेंट के बारे में ऑन से सबको मालूम होता ही है मैनेजमेंट कैसे कुछ हो सकता है क्या डाइटरी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं जो थोड़ा इससे बचाया क्योंकि जो जेनेटिक लेवल पे बातें हैं वो तो अलग ही है। तो आज हमारे प्लेटफॉर्म जितने भी और हमारे नए थे आज मनीषी लोग जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बॉडी का पार्ट कोई भी सिस्टम कोई भी हो डिजीज कोई भी हो हमेशा ही ये हमारे सब मानवता के लिए एक सोच का विषय होता है। तो इसी को लेके आज हम लोग सिकल सेल एनीमिया पर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। ओवर टू क्वेश्चन। नमस्कार। धन्यवाद बहुत बहुत आभार सर आपका। मैं आदरणीय अतुल देसाई जी को सादर आमंत्रित करता हूं उनके विचारों के लिए। डॉक्टर अतुल देसाई जी स्वागत है। थैंक यू सर थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को विश्व सिकल सेल एनीमिया जागृति दिन की शुभकामनाएं। और वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश में सिकल सेल जागृति ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम एकदम जोर से चल रहा है। तो आप सभी मध्य प्रदेश वासियों को भी शुभकामनाएं कि आप इसके अंदर अपना हाथ बढ़ाए और अपने भाई बहनों को एक अच्छा जिंदगी दे। बराबर। मेरा स्क्रीन शेयर हुआ है? हेलो 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 Is it I'm audible? Yes, yes. Yes, sir, you are audible, sir. Okay, and no, not yet, not yet. Hello, is it I'm audible? You are audible, but your screen is not sharing anything. Okay, I'm just You have to sharing a upload, screen. yeah. Okay. Okay. Now, is it visible the screen? Hello. Got it. It started. Okay, okay. You make a presentation mode in a full screen. Okay. So first of all, thanks for inviting me on the subject of sickle cell anemia, concern and care. As Dr. Vijay Agnihotri patiently mentioned previously, it is a genetic disease, and we are not going to depth of the genetic mechanism. But I would like to share some few things about history and Ayurvedic view about the sickle cell anemia. So sickle cell anemia first find out in 1910 decades by Harry, a Chicago-based physician. Basically, he is a dentist
And during his dental surgery, he find out some abnormal bleeding pattern and crisis painful threshold. And he find out in slide, this is a recent set RBC. And then after they put in the tag of sickle cell anemia, which is due to the abnormal set RBC like crescent and banana. Okay. So even observe the transformation of bioconcave red cell to the sickle form in vitro mechanism. He also noted that sickling occurred in the patient with severe anemia and in other who were apparently healthy, thus recognized both sickle cell anemia and sickle cell trait. So here the basic mechanism, what is sickle cell anemia? Sickle cell anemia is a pattern of abnormal hemoglobinopathy in that fetal hemoglobin, sickle hemoglobin, adult hemoglobin indicating that HbSS is a sickle cell disease and HbAS is a sickle cell trait. Few patients having also sickle beta thalassemia. In the sense they have thalassemia minor, simultaneously they have sickle cell trait and they suffers a lot. That is HbAS in mechanism of associated with the fetal hemoglobin. So this is a history in decades, 19 decades, they find out about the sickle cell anemia. So on sickle cell anemia, what we can go through the as per the AYUSH view, Ayurvedic view. In my view, basically I'm completed my doctorate in the subject of sickle cell anemia. So I here try to put some summaries, which is according to our Ayurvedic constitution, Vata, Pitta, Kapha and Dosa based mechanism. Okay, so here I describe abnormal hemoglobinopathy like G6PD, thalassemia and sickle cell anemia are major issues for the system of all medical sciences. Not only the Ayurveda, allopathy, homeopathy, but all medical science having a burden about these hemoglobinopathy issues. So in that sickle cell anemia, prevalence of sickle cell anemia and the treatment of sickle cell anemia still today, it is not clear, not having the SOP and not having some documented evidence how to maintain them and how to cure them. So for that, there is a number of channels treatment funda established here that I mentioned here. Life science, Ayurveda, having all require information related to quality of life and human longevity. So our Ayurveda believes that prevention is better than cure. And for that prevention, we have so many causes and so many crowns how to maintain a quality of life with whatever we have disease in the form of disease, but we have many alternatives options. So we use that. So we never compare with any medical system, but we must understand the traditional life science with the present knowledge. Ayurvedic Samhita describes blood in the sense Rakta, qualities of blood, functions of blood, qualities of a person with the ideal blood, increase the quality of blood, polycythemia vera in the sense Rakta Vriddhi, decrease in the quality of blood in the sense anemia, Rakta Kshaya, and vitation of the blood, Rakta Dushti, under specific chapter of Panduroga. When the dosas becomes aggravated and pitta is mostly acid, the pitta in the heart is forced into the arteries and when attached to the heart, it is vayu that causes pitta to move and then spread throughout the body. Pitta then whites kapha, skin, blood, and muscles, causing them to turn yellowish white, most common color of anemia, deep yellow. 5 kinds of anemia described in Ayurveda is Vatas, Pittas, Kaphas, Tridosas, and kind for the eating mud, Mruduka Praksajanya anemia. Ayurveda describing that. So for sickle cell anemia, I am trying to interpret this Charak Samhita's references. Suprasonita Jeev Sanyoga to Kalu, Kuksigata Garbha Sangna Bhavati, Tesam Sanyoga Vibhagam
Parmanunam Karanam Vayu Karma Svabhava. Ayurveda gives details about genetic science. Indian scientist Charaka and Sushruta has described all these in their Samhitas in BC period. Male and female are responsible for newborn baby, which is the carrier of parents' Prakriti. And these all things have been done by the Vata. Vata promote all other dosas, dhatus, mala, and so it is equivalent to DNA. मनुष्य बीजम ही प्रत्य अंग बीज भागा समुदायिकम स्वद दृश्य प्रत्यंगम समुदाय पुरुषकम उज्जयते. Above described the Charaka indicate that Ayurveda have a micro details of Sarira which was without microscopic observation. They describe cell, sperm, ovum, fertilization, fallopian tube, system organ, chromosome before 5,000 years ago in Sanskrit. So for sickle cell anemia and thalassemia, we just say that sajanmana jayate iti sahaja. Sahajata se jayapi jayate sahaja vyati. In Janmabal Pravut Pandu, the sickle cell in Ayurveda known as a Janmabal Pravut Pandu. So for that etiology is genetic factor operating in the intrauterine life, cause soul path, signs of past life of individuals, in the sense parents having the same sickle carrier, sickle trait mutation, and they transfer to their kids for carry on ahead. So signs of past life of individuals and of parents are responsible for fetal abnormalities and idiopathic disease. Hereditary factor, gross defect in the sperm ova gives rise to sterility or abortion. Defective chromosome and genes, which bhaga avayav, are responsible for abnormalities of blood cell. Consanguinity, avoid marriage in close relatives. Chances of inheriting hereditary disease are increased. This is a very important consanguinity. In thalassemia, this is very common. Few family we found that they married inter-relation mechanism and they develop the G6PD and thalassemia minor. In sickle cell anemia, the family consanguinity for the treatment purpose very important because we must suggest them that if you have the sickle cell trait or disease, before marriage, you go through the marriage counseling as well as the blood test counseling of the abnormal hemoglobinopathy and go ahead to make a baby or not. Constitution, parents should not have same disease. Like if we recommended that if parents have not sickle cell anemia, they may be free from the sickle cell anemia. So this is our Ayurvedic view. And as per Charak mentioned in fifth edition, never we try to compare each and every disease with modern disease with Ayurveda and modern terminology with Ayurveda, which just go through the those dhatu, mala, mushya, those dishes, the moshana, vikruti analysis and treated them. Now the question is that how we able to give them quality of life with the Ayurvedic funda and with the Ayurvedic approaches. So basically, what we are using at our clinic, we recommended each and every patient before testing and after testing both times. If anybody having sickle cell, there is a true variant of sickle cell anemia. Here I mentioned that this one picture shows this is a sickle cell trait patient. In the sense they have HbAs hemoglobinopathy, and this one another total red picture having HbSS hemoglobinopathy. So HbAs and HbSS person are recommended before going to marriage. They go through the marriage counseling parallelly, blood test analysis of abnormal hemoglobinopathy for marriage purpose. Because if sickle cell trait patient married with the sickle cell trait patient, they deliver 4 child. So out of 4, 1 having sickle cell disease and rest of 3 having sickle cell trait. So they gradually rise the population of sickle sufferer in the world. Simultaneously, same sickle cell disease having a same issue. If sickle cell disease having married with the normal people, but if they produce 4 child,
they deliver 2 sickle cell disease, 1 sickle cell trait, and probably doubtfully one normal. So the doubtfully one normal is analyzed because out of 1,000 patients, only one are free from these circumstances. So in this case, sickle cell anemia, marriage counseling is very important. Secondary education is very important. Third one, nutrition is very important. Because as Ayurveda says, is that prevention is better than cure. So for prevention, already we know that we having sickle cell anemia patient having. So they follow a certain lifestyle compared with the Rutucharya, Dincharya mechanism. And according to that, they follow the diet and they wear the clothes, they consume the liquid, they consume the seasonal fruit, and they have the quality of life with this kind of pattern. Most important thing, we observe who is doing regularly morning and evening, only 3 minutes pranayama, that will prevent them from the sickle crisis condition. More than 80% we observe in our day-to-day practice. So for them, we insist each and everybody, you can do daily pranayama, simple pranayama, just sit isolatedly. Otherwise, when you wake up and when you go to the bed, you take lie down and take deep breathing, inhale and exhale 3 to 4 minutes, and that will enrich the oxygen carrying capacity to the lung field, and it's prevent from the hypoxic condition. So once they prevent for the hypoxic condition, and they maintain their oxygen level in their blood cell as well as the body, they free from the crisis condition. So for sickle cell anemia patients, the pranayama is a very most important thing. Secondary, 6 to 8 hours sleep is very important. Generally, we notice that that medical science right now doing so many research, and majority of cases which having diabetic and hypertensive, we found that they have sleep apnea. And the sleep apnea, in the sense, it's a one kind of snoring pattern, but they are not they haven't a sound sleep. So once they haven't sound sleep, the naturally oxygen mechanism, antioxidative condition they build, and the stress create also the crisis mechanism. So 6 to 8 hours sleep is a quite good. Consume lots of liquid things, liquid juice, liquid water for maintain the hydration to prevent from the dehydrative condition and rise the crisis condition. So drinking a plenty of water. Third one, we recommended to use seasonal fruit. Seasonal fruit in the sense, whatever we have the seasonal fruit here, not only the banana and chickus we can eat, but seasonal fruit like mango, grapes, strawberry, uh, beans like that, fruits we can use. So that the nutritional value maintain the electrolyte structure, sodium, potassium, chloride, and they free from the crisis condition, painful condition. Regularly, we recommended in our rural tribal territories who haven't get the opportunity to buy the seasonal fruits, even they were not able to buy the seasonal fruits. We recommended them to consume 2 tomato daily with masala of dhania jeera and salt to be hydrate yourself and use plenty of water and prevent from the crisis mechanism. So these are the things, these are the tips how to be happy, healthy with the sickle cell anemia. So first issue is that maintain your diet and lifestyle. So in lifestyle, try to avoid hard working in this season, particularly uh, April, May, June. Try to hard working in the afternoon session, doing whatever you want to do, farming, etc. Job at the early morning. Otherwise, after 4 p.m. you can join your job. Secondary, prevent yourself from the winter also, deep cold things also. Try to avoid yourself from the high chilly things, thanda, cold water, ice cream, and all these things. Secondary, we insist everybody to use beans, sprout every day, otherwise alternate days, to maintain your protein and carbohydrate levels.
Even we recommended who is consuming non-vegetarian food, we recommend them to use eggs and roasted chicken for the balancing of vitamin deficiency, iron deficiency, B12 deficiency, and calcium. So these are the primary tips how to take care and how to prevent from the crisis mechanism. Now, the major issue of sickle cell anemia patient is, you know, that who in tribal territories, even I observe in the Madhya Pradesh also many sickle patients, they drop out from the education. They discontinue their studies. So for that, I insist them, you can use your uh, regular lifestyle pattern with the good food habits and try to avoid yourself with the infected person. Infected person in the sense who having cold, cough, seasonal infection. So prevent yourself from the infected person and use the vaccines like rabies vaccines, pneumococcal vaccines, triple antigen vaccines, which are provided by the government at PHC, CHC level. So follow the government guideline and follow the vaccination chart and take it regularly to develop your immunity and to prevent yourself from the seasonal affected condition, epidemic conditions. Secondary, for every sickle patient, we suggested them doing pranayama. You have to learn up to your capacity. You have to join the school, college. And we noticed that who is learning, who having 10th standard graduation, who having 12th standard graduation, they must take care themselves parallelly. They must take care of their family too. Here, I have the many sickle patients who having double graduate doctors, homeopathic doctors, MBBS doctors, and now they are trying to convince the another community people, yeah, how do we prevent yourself and take care of yourself with a good, happy, healthy lifestyle, follow the Ayurvedic lifestyle. Even they must enjoy their life with music, movie. Even they have to join the laughing club also. They try to psychologically uplift, motivate by the community, by the culture, by the group activities and witty to develop their health. And for that, every 19th June, we celebrate the Sickle Cell Awareness Day. And generally, we notice since last 11 years, our NGO will working here in our territories. And we invited the people who having the sickle cell anemia. We create the drawing competition, essay writing competition, even sports activity. And in that activities, only the sickle patient can be participate, and with the good some prize money, we facilitate them. And we notice that they are encouraging, they uplift their lifestyle and almost stay free from the crisis condition. So three things is very important for the sickle cell anemia care. First, hydrate yourself proper. Second, take proper sleep and maintain your lifestyle. And third, you have to be diet according to your capacity, but happy, healthy diet you can consume, which maintain the electrolyte structure and have the quality of life. This is our primary recommendation to each and every sickle patient. Here is the I show the one case studies. He is a Dr. Garesia from medical college. He himself working in the laboratory. He having beta thalassemia, his wife having sickle cell trait, and his son having sickle cell disease. It is equivalent to sickle cell disease with beta thalassemia. Right now, the Vatsal having 21 years age from his childhood, he is our observer under our observation, and he is our patient, and he is using Ayurvedic treatment. So, in due to treatment, he completed his graduation, and he is one of the best cricket player. So, this is the strength of good lifestyle, Ayurvedic lifestyle, and Ayurvedic medicine. Thank you very much for anticipating in this.
This one is our research molecular, world-class research molecular, which is first ever inhabit the sickle RBC and control the hemolysis in the sickle patient and maintain their hemoglobin with the immunomodulatory mechanism. Thank you very much, and thank you all of you. And my honor to our respected Nishan Shuklaji sir. Thank you very much, sir. I think you forgot me, but I am also, associated with the Jamnagar University. So thank you very much. थैंक यू वेरी मच अतुल जी, बहुत अच्छा, आपने तो सभी कुछ क्लियर कर दिया, क्रिस्टल क्लियर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू फॉर क्लिनिकल रिसर्च projects also. Anytime, sir. For sickle cell anemia, anything, anytime. Thank you very much. So nice of you. Okay. Agnihotri sir. Thank you, sir. Thank you, Professor Bhumshamaji. Really, as far as the presentation of Dr. Atul Desai is concerned, really it was a nutshell and complete. The way you started, that the person, those who are going to get married, they should get their blood checked, so that, especially with the sickle cell presentation is concerned. And secondly, we talked about the persons that how it infects the generation. Sorry, Dr. Agnihotri ji, interrupt you. But we have two more things to explore for the entire sickle community. We have one mobile application, Sickle Herbocare. So anyone can download from the Google app and can apply and easily communicate with us anywhere in the world. And second one, we have paid application that is also on Sickle Herbocare, which is website based. So you can submit your medical history. So our office representative can communicate and provide you the counseling doorstep. Only one time single fees. That's a great support from your side, and really those who are having any information regarding the sickle cell persons, they can also opt for it. Not only a person who is supposed to suffer or who is suffering, this is an information which can be forwarded to all the persons, those who are having any contact with the sickle cell person. Secondly, you talked about the village persons, the rural persons, those who are not having regular seasonal fruits, they can go for the tomato use. This is really wonderful, and which they can manage easily. Tomato, and with the masala and Dhania, so it's according to modern science, it balances the potassium and chloride, but as per the Ayurvedic science, it's control the tridosa. Once it's control the tridosa and neutralize the potassium and chloride, automatically they recover from the crisis mechanism. From modern point of view, it is also containing lycopene. It is a lycopene is one of the best and antioxidative molecule. Exactly. And in sickle cell anemia, oxygen crisis is a major issue. That's why I pointed out. So this is way we can interpret in any way in the terms of modern medicine or Ayurvedic medicine. But it is we raise more than 140 shortcuts how to prevent them from the blood transfusion, IV treatment, oxygen, and etc. So, and lastly, you put some 5 points samadhan. That is wonderful, and especially for that, hydrate yourself. One point I noted that hydrate yourself, and second one is maintain the lifestyle. Lifestyle is very important. Lifestyle is very important. And third one is you talked about the diet. So all this combination, it itself will make a person a bliss to perform. मैं आपको एक बात बताऊं, आप चौकन ना रह जाएंगे. आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक बॉर्डर का इलाका है, वहां सिकल सेल के पेशेंट ज्यादातर 30% पॉपुलेशन को है, बट दे नेवर अंडरवेंट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन पेनफुल कंडीशंस. वंडरफुल. और उसका कारण मैंने जब जाना तो मैं शॉक रह गया. वो टेरिटरी में महुआ का प्लांट्स ज्यादा है, महुआ ट्री, और मधुरी का जो उसका फ्लावर होता है, वो फ्लावर का वो चटनी बना के खाते हैं, तो उनसे वो लोग ठीक रहते हैं. And wonderful. And thirdly, you pointed out one couple who was having sickle cell anemia in both the persons, and they also managed their life.
So with all these contributions, He's a good cricket player. The Vatsal who Yeah. having sickle cell disease with beta thalassemia minor, he's one of the good cricketer, and since last 20 years, he never underwent for the blood transfusion. wonderful. And his father is a MD pathologist working at a civil hospital. He resigned from the job and he is working for the sickle awareness campaigning in my territories. आप मुझे लाख रुपया सैलरी देना, मैं काम करूंगा. It's a great contribution of Dr. Bansal, because where there is need, he is there. This is what, and so the same case with you. So a lot of thanks to you and for your contribution. And you Thank please you. remain, you please be associated with us, and as Professor Pawan Sharma ji offered you. मुझे द्विवेदी जी जब Thank you, ऑर्डर thank you, करेंगे thank मैं you. हाजिर रह जाता हूँ. मैं अभी बाद में हॉस्पिटल में राउंड लेने जाऊंगा, लेकिन इनके लिए टाइम स्पेयर कर दिया. So kind of you. Thank you, thank you. क्योंकि आप काफी Now अच्छी I would like एक्टिविटी to करते request हैं. Dr. Nishant Shukla ji. Welcome, Dr. Nishant Shukla ji. He's my professor also, but I am not direct student of him. अच्छा अच्छा, क्या बात. Unmute कीजिए शुक्ला जी, unmute. You are, yes, welcome, welcome. Hello. Thank you, sir. Shall I take leave, sir? My one small question is there, because I'm Dr. Gaikwad. I'm a veterinarian actually, but this may cause even thromboembolic complications are quite common in sickle cell also, no? Yes, true. Yeah. So whether this this is mostly intravascular hemolysis. Yes, And true. because of that only jaundice and other things may be happening actually. It's a byproduct of Yeah. hemolysis, Yeah. constant Yeah. hemolysis, and lifespan of sickle So, RBC. In Ayurveda, you will be increasing actually intravascular, because here sometime even osmolarity maintenance and dispersion, because most probably this red cells might be causing I can explain you, Rajeev ji. I can explain you. deformability. I can It is better to have question answer session in the last after Nishant ji. नहीं, this is a It good is my humble question. request. नहीं, this is a good question, sir जी. राजीव जी ने एकदम बढ़िया क्वेश्चन राइज किया है. Which are the major issue of entire sickle fraternity? So Gaikwad ji, I am very thankful you raised this question. Basically, you know that Ayurveda having so many multi-action formulations. Okay. Yeah. So I am not a practicing doctor. I am simultaneously clinician and doing clinical research parallelly to allopathic science. So we developed this one product, IUHM Premium, which having thrombolytic action also. And why it is? Because we reduce the hemolysis, because we develop the oxygen carrying capacity in the blood cell level. So never rise the any obstruction and rise the hemolysis mechanism. So T cell of the human body, which are the main factor to damage the blood cell as well as the create the hemolysis. So we direct control the T cell, and which is proven on the RBC mice by immunomodulatory mechanism. So we reduce all this procedure to create a thrombocytic action. Okay. Secondary, if anybody having this kind of action, we use you know that nut vomica in the nutmeg. Do you know about the nutmeg? Jaifal. Okay. Jaifal is one of the best medicine for that, and we observe the result. So you just make a Google Scholar and not search the Dr. Atul Desai publication. So you found all research paper in that effectiveness of the herbal medicine on the thrombocyte of any condition. In pharmacology, in medical language, it's known as a T-booth mechanism. T-booth mechanism. And we publish the work that it is better than any other available product like aspirin, heparin, anything. We act more than 92%. So that is published work, Gaikwad ji. So you just got the paper through the Google paper. Because we are also getting in animals. Actually, we are seeing some of the cases. You can use our product, Rajiv ji. Okay. And secondary, for surprising your knowledge, the first ever word sickle cell anemia
simultaneously the corona word also described and clinical studies conducted on the animal also. Human are raised after on that once the Western countries take interest in the sickle cell anemia, the big giant pharma company take interest in the sickle cell anemia. Then after it's go to the bloom. Otherwise, first study conducted on the animal. Yeah, that is there actually. Even corona also, even corona virus also found firstly in the animal before 20, 30, 40 years ago. Yeah. In all species it is diagnosed. Yeah. But I am like your Thank you, knowledge, both of you. Rajiv ji. Thank you very much. Thank you. Appreciate you for the Thank good, you for the your raising the nice good question. Now I would like to request Dr. Nishant Shukla ji. Welcome, Nishant ji. Welcome. Please unmute. नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सबसे पहले क्षमा मांग लेता हूँ मेरे अग्रिम वक्ता की कि मैं उनका जो है वो पूरा व्याख्यान नहीं सुन पाया था, और इस सभा से भी मैं यहाँ पर जो है वो क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बीच में कनेक्टिविटी के कारण मुझे जो है वो डिसकंटिन्यूएशन हो चुका था। कुछ एक बातें सर ने बताई होंगी, उनका जो है वो काफ़ी अच्छा क्लिनिकल वर्क रहा है और उन्होंने जो है ये मेडिसिन स्पेशली एक जो है ये डिज़ाइन की जैसा मैंने समझा है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट। सिकल सेल की जब हम बात करते हैं तो शायद ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कुदरत ने क्यों रखा, यही जो है वो अब तक समझ में नहीं आया। जब हम बेसिक बायोलॉजी को पढ़ते हैं, फंडामेंटल बायोलॉजी को पढ़ते हैं, तो उसमें एक प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड सेकंड वन इज नेचुरल सिलेक्शन, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एंड एज पर द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जितने भी जेनेटिक डिफॉर्मिटीज हैं ये एबॉलिश धीरे धीरे जो होती जाती है अगर कोई जो है वो एडवर्स फैक्टर जो है वो नहीं मिलता। एनवायरमेंटल है, डायटेटिक फैक्टर है, सनलाइट वगैरह के फैक्टर्स हैं, म्यूटेशन है, कॉस्मिक रेडिएशन है, तो ये अगर फैक्टर्स नहीं मिलते हैं तो म्यूटेशंस जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हेल्दी जीन्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। पर सिकल सेल एनीमिया में ये ऑब्जर्व नहीं हुआ है। और एक ये मंतव्य आया था कि सिकल सेल एनीमिया जो रहा है तो उसका जो है ये एक कारण ये हो सकता है कि जहां पर ये मलेरिया ज्यादा मात्रा में मिल रहा है वहां पर सिकलिंग अगर हो तो ये एक प्रकार से उन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है। दिस इज ए वन फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो मलेरिया की मॉर्बिडिटी ऐसे कंडीशन में जो है ये कम होती जाती है, और जहां पर मलेरिया ज्यादा मिल रहा है वहां पर सिकल सेल के पेशेंट्स भी जो है वो ज्यादा मिलते हैं। तो इस थोड़ी प्रस्तावना के साथ मैं अपना जो है ये वक्तव्य आज का जो है वो शुरू कर रहा हूँ। काफी सारी बातें सर ने बताई हैं पर कुछ एक जो है ये शायद ये रेपिटेशन हो पर ये आवश्यक है। तो आज का दिन बेसिकली 19 जून का है, पर आज हम इसको जो है वो चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली सीडीसी ने इसको जो है वो इस पूरा जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करने के लिए और किस प्रकार से एक हेल्दी सोसाइटी का हम निर्माण कर सके उसके लिए सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल एनीमिया से आगे चल करके सिकल सेल डिजीज की बात जो है ये हम ये कर रहे हैं। बेसिकली इसमें जो है वो कॉमन प्रेजेंटेशन जो है ये एनीमिया है। ये एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मैं टॉपिक से जो है वो थोड़ा हट रहा हूँ। जब हम बात चरक के स्टडी की करते हैं या शोषक के स्टडी की करते हैं तो उसमें जो है वो रोगों की संख्या सीमित है। चरक ने 30 अध्याय में से पहले के 2 अध्याय को निकाल दें तो कुछ 28 जो है वो रोग, और बाकी जो है वो फर्दर जो है वो दोष के हिसाब से देखें तो 80, 40 और 20, और फिर तरतम भाव से देखें या फिर दोष के अलग अलग प्रभाव से देखें तो ये जो है ये संख्या आधुनिक विज्ञान की संख्या से जो है ये काफी जो है ये कम है। पर
जब हम इसको आज के संदर्भ में इसको समझने के प्रयत्न करते हैं तो हमारे पास जो ये डिस्क्रिप्शन है ये क्लिनिकल एविडेंसेस के आधार पर है, क्लिनिकल सिमिली के आधार पर है। जैसे अभी सर ने बात बताई कि थैलेसीमिया भी एक चर्चा का विषय और ये भी जो है ये एक मेडिकल ग्रेटेस्ट मेडिकल प्रॉब्लम है। तो ये सभी जो है ये एनीमिया की श्रेणी में, पांडु और कामला की श्रेणी में जो है, और ये कहीं ना कहीं रस और रक्त और पित्त का जो है ये डोमिनेंस के कारण ये रोग जो है ये होते हैं। तो दिस इज आयुर्वेदिक फंडामेंटल एंड दे हैव गॉट द सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. This is the fundamental difference in the description from the modern science. Nowadays, we are going on to the classification where we are mixing up the things also. Sickle cell anemia की जगह पर आज जो है वो sickle cell disease की बात हो रही है, because one will have a different set of problems. अभी जो है वो intravascular changes की बात हो रही थी. Similarly, एवास्कुलर नेक्रोसिस सिकल सेल में होता है, हिमोलिटिक क्राइसिस होती है. तो ये जो है वो अलग अलग प्रकार से जो है ये प्रेजेंटेशन ये होती है. तो एक ही टाइप के प्रेजेंटेशन होने की जगह पर वेराइट फॉर्म में ये जो है वो मिल रहे हैं. तो इस हिसाब से जो है ये नोमेनक्लेचर और डेफिनेशंस ये चेंज हो रही है. सो वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सिकल सेल डिजीज. तो लेट्स गो विद दिस सर्टेन डिस्क्रिप्शन. We have to accept that the modern has got a detailed literary work. और हम सांख्य की बात करते हैं, चरकाचार्य सांख्य वेद को जो है वो चिकित्सक के साथ में रहने की बात करता है, पर हम संख्या की कम बात करते हैं. ये आधुनिक विज्ञान में हमें संख्या जो है वो मिलती है, तो उन्हीं को जो है वो आधार बना करके हमें जो है ये डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है. सिकल सेल इज अ वेरिएंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट इज कैरेक्टराइज्ड by changes within the hemoglobin, and that is nomenclatured at HbS, resulting from presence of a mutated form of hemoglobin, that is HbS. It is commonly found in America as the homozygous HbS disorder. Autosomal recessive disorder was first described by Eric in 1910. So this is the brief description about the sickle cell anemia and sickle cell disease. यहाँ पर जो है ये हर एक में जो है ये मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट जो है ये डिफर जो है ये करता है. और जैसे अभी सर ने बात बताई कि जैसे हम अगर नेचुरल फूड मटेरियल, नेचुरल ग्रीन्स का, फ्लेवोनॉइड्स का अगर ये उपयोग होता है तो जो सफरिंग है वी आर नॉट एबल टू ट्रीट एंड वी आर नॉट एबल टू revert back the procedure of the hemolysis and sickling, but at the same time उनकी जो है वो quality of life जो है वो improve हो सकती है. Basically होता ये है कि अगर arterial blood में sickling हो रहा है तो उसकी oxygen carrying capacity जो है ये घट जाती है, और अगर venous blood में ये अगर sickling होता है तो उसकी जो है वो presentation mild form होती है. उनमें जो है वो anemia जो है वो milder form में जो है वो देखा जाता है. तो अगर हम ये कर सकते हैं, इसका एविडेंस कोई है या नहीं है, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने अभी तक इस प्रकार की क्लासिफिकेशन मैंने जो है वो नहीं पढ़ी. दैट इज ओनली द अंडरस्टैंडिंग कि भाई इस प्रकार से हम कर सकते हैं. तो इनकी क्लिनिकल जो है और ऑन पेशेंट रिकवरी को हम जो है वो इजीली जो है वो देख सकते हैं, और उसके हिसाब से उनकी मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी दोनों जो है ये अलग जो है वो पड़ेगी. इट इज हैविंग डिफरेंट इन क्राइसिस, difference is the degree of anemia, their organ symptom involvement. तो ये individual to individual ये vary करती है. और इसमें basically जो है ये major form में, minor form में इस प्रकार से clinically इसको जो है वो समझाते हैं और इस प्रकार से इनकी जो है वो treatment basically करते हैं. I am not going into the detailed theory of sickle cell disease. DNA polymorphism of beta S cell gene is basically responsible. Heterozygous HbS gene is having high prevalence and persistence. It is observed more in sickle cell, malaria prevalent area. जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ये कुदरत का करिश्मा या फिर कुदरत का जो है ये एक प्रकार से विपरीत आशीर्वाद है. दिस इज अ कर्स. बट जो मलेरिया डोमिनेंट एरिया है वहां पर this disease
ब्लेसिंग, दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये अच्छी नहीं है, पर जो है ये जो भी ये है प्रिवेंट करता है मलेरियल डेथ को, तो दिस इज वन फॉर्म ऑफ ए ब्लेसिंग इन दोज एरिया। और इसके कारण जो है ये एक मान्यता है कि अभी भी जो है ये डिजीज ये वैनिश नहीं हुई है, ये म्यूटेशन जो है ये कंटिन्यू हो रहे हैं। एक्सेलरेटिंग सिकलिंग, डू पैरासाइट्स सेल्फ आर रिमूव। तो पैरासाइट सेल्स जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट या इसमें जो है उसमें से रिमूव हो जाते हैं, उसके कारण जो है वो टिपिकल मलेरिया सिम्टम नहीं होते। या फिर दूसरा तो ये प्रोबेबिलिटी ये है कि दीज पैरासाइट्स आर नॉट एबल टू गो एंड मेटाबोलाइज विद इन द टिश्यूज। तो ये पैरासाइट्स की एक टिपिकल प्रोलिफरेशन की जो है वो विधि रहती है, टिपिकल सेल्स में जाकर के अपनी जो है ये जीनोम को ट्रांसफर करते हैं, और जीनोम को ट्रांसफर करने के बाद बॉडी सेल रिसोर्सेस को यूज करके जेनेटिक रिप्लिकेशन होता है, और फिर जो है वो कंप्लीट जो है वो पैरासाइट ये बनता है। या फिर जिनकी अपनी जो है ये रिप्रोडक्शन स्ट्रेंथ होती है, बैक्टीरिया है, प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोआ है, उनकी जो है ये एक नेचुरल जो है ये रेप्लिकेशन फिनोमिना होती है, तो ये बॉडी रिसोर्सेस को यूज करके ये रेप्लिकेट करते हैं। पर सिकलिंग में ये दोनों जो है ये पॉसिबिलिटी जो है ये नहीं होती, एंड दैट्स व्हाई दे प्रिवेंट द मलेरिया टू occur, or they may prevent the complications of malaria, especially the morbidity of the malaria, mortality of the malaria. Now there are some factors that affects this sickling, and these factors can also have the reverse consequences. तो सीकलिंग को जो प्रमोट कर रहे हैं वही जो है ये कहीं ना कहीं ऐसा फैक्टर है कि जो इनका कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी जो है ये देखे जाते हैं। तो जो फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं उसमें हाइपोक्सिया है, डिहाइड्रेशन है, एसिडोसिस है, फटीग है, ओवरवर्क है। पांडु में हम अतिश्रम को भी एक जो है ये कारण मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये एक्सेसिव फटीग ये इसको जो है ये करता है। सिमिलरली द कोल्ड एक्सपोजर एंड लास्टली द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, दिस आल्सो ट्रिगर द सिकलिंग। एंड देयर इज द कॉम्प्लिकेशन, जैसे अभी जो है ये बात हो रही थी वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस, ये कब जो है ये प्रोलिफरेट होती है, या फिर कब जो है ये इसमें सिकल सेल में ये देखे जाते हैं। तीन एक जो है ये इम्पोर्टेंट चेंज सिकल सेल एनीमिया में होते हैं, और उसमें जो है ये वासो ऑक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एक्यूट हार्ट सिंड्रोम, देन एवास्कुलर नेक्रोसिस। ये जो है ये ऐसी कंडीशन है कि जो सिकल सेल के कॉम्प्लिकेशंस में, ये सिकल सेल डिजीज की कॉम्प्लिकेशन में या कोमॉर्बिड या फिर सिकल सेल डिजीज एज अ होल उसमें जो है ये देखा जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट चेंज यहाँ पर जो है ये होता है तो वासो ऑक्लूजन का जो है ये होता है। तो यहाँ पर एक चीज जो है ये इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, पित्त की जब दृष्टि होती है तो पित्त की दृष्टि अगर कफ के साथ है तो यहाँ पर ऑक्लूसिव चेंजेस ब्लड में जो है ये होना शुरू हो जाता है, ऑक्लूजन जो है ये होना शुरू हो जाता है। अगर पित्त अकेला जो है ये बड़ा है तो चरक के अनुसार त्यायति चिरेण च, तो यहाँ पर जो है वो रक्त स्तंभन जो है वो देर से होता है। इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर जो है ये ब्लीडिंग टाइम जो है ये बढ़ जाता है। अगर ये कफ के साथ दूषित है, कफ में जो है ये पिच्छलत्व की बात चरक ने रक्त की दृष्टि में 24वें अध्याय सूत्रस्थान में बताई है, तो जहां पर पित्त और कफ दोनों विकृत हुए तो ये दोनों ये रक्त में ऑक्लूसिव या फिर स्थानत्व को जो है ये बढ़ा देता है। सिमिलरली यहाँ पर एक दूसरा जो है वो रेफरेंस मेरे ध्यान में आ रहा है, ये वात रक्त का है। रक्त मार्गम निहंत्याशु शाखा संधि सुमारुतः निविष्यम अन्योन्यमावार्य वेदना भी हरेतसुम। गाणेकर जी ने वात रक्त को गाउट के साथ ये कंपेयर किया है, पर जब हम वात रक्त को चरक के हिसाब से बढ़ते हैं, सुश्रुत के हिसाब से तो ये संधि प्रदेश में होता है, तो सुश्रुत के अनुसार जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये गाउट जो है ये अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है। पर जब हम चरक के हिसाब से ट्रांसलेशन करते हैं या फिर चरक के हिसाब से हम जब इसको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं
तो एक दूसरा जो है ये होराइजन, ये दूसरा अप्रोच जो है वो सामने निकल के आता है। एंड ऑल फॉर्म ऑफ वास्कुलर डिसऑर्डर्स, चाहे वो आर्टरीज के रिलेटेड हैं, चाहे फिर वो जो है ये वेन्स के रिलेटेड हैं, चाहे फिर वो कैपिलरीज के रिलेटेड हैं, जैसे टीएओ है तो ये आर्टरीज के साथ रिलेटेड है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है तो ये वेन्स के साथ रिलेटेड है, सेल्यूलाइटिस है जो कैपिलरीज के साथ रिलेटेड है, एवास्कुलर नेक्रोसिस है जो वंस अगेन वास्कुलर ब्लड फ्लो से जो है आर्टरीज से जो है ये रिलेटेड। तो इस प्रकार से जो ऐसे जो चेंजेस हैं यहाँ पर वायु और रक्त दोनों की दृष्टि के कारण रक्त का मार्ग विकृत होकर के, रक्त में का आवरण होकर के आगे का जो है ये पोषण नहीं होता है। तो दिस आर द फैक्टर्स व्हिच वी मे हैव टू थिंक एंड वी मे हैव टू कंसिडर व्हाइल प्लानिंग द इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। Hypoxia, infection, dehydration, acidosis, alcohol intoxication, emotional stress, pregnancy, these are the factors they can initiate the process of vaso-occlusion in the cases of sickle cell anemia, vice versa. Now coming on to the Ayurvedic fundamentals, I have taken a lot of time in discussing this one. Now the first and foremost important thing is to be highlighted, it is the opinion of Chakrapani. और ये मैंने 2-1 बार इसी मंच से जो है मैंने बोला है, थैलेसीमिया की जब हम बात कर रहे थे तब भी जो है मैंने इस पर जो है ये चर्चा रखी थी, और सिकल सेल एनीमिया में भी यही जो है ये चर्चा का विषय जो है ये है। आयुर्वेद ने फंडामेंटल जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया है, मॉडर्न में इसकी एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो काफी ज्यादा है। सो दिस कैन बी अप्लाइड इन दीज कंडीशंस ऑल्सो। यद्यपि रक्तपित्तयोः एक योनित्वात् पित्तेन यह रक्तवृद्धि भारव्याः, जो हम हीमोग्लोबिनोपैथीज की बात करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करें जहां पर हीमोग्लोबिन जो है ये इम्प्रॉपरली फॉर्म हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है ये एनीमिया होना स्वाभाविक है। और ये एनीमिया जो है ये पित्त की विकृत वृद्धि से ये हो रहा है। पित्त और रक्त एक ही स्वभाव के होने के कारण अगर पित्त की वृद्धि होती है तो रक्त की भी वृद्धि होगी। और यहाँ पर एक जो है ये हमें ट्रीटमेंट में ये ध्यान देना होगा कि हम केवल पित्त को बढ़ाने की अगर हम औषधियाँ देते हैं, जैसे एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग गाजर वगैरह देते हैं, टमाटर वगैरह देते हैं, तो ये जो है दिस आर मूल, तो ये इनको जो है वो पित्त प्रकोपक जो है ये कहा गया है। तो कहीं ना कहीं हम इनको जो है वो बढ़ाने की जगह पर उनका प्रॉब्लम बढ़ाते तो नहीं है, जबकि होना ये चाहिए कि औषधियां ऐसे सिलेक्ट की जाए जिनका वीर्य शीत हो, पर ये अग्नि जो है वो देहाग्नि को और खास करके धात्वाग्नि को थोड़ी जो है वो वृद्ध करे। नागकेसर जैसे है, नागकेसर रक्त स्तंभक है पर ये उष्ण वीर्य है, पाचक है। तो इसी प्रकार से गुरुचि भी ऐसी औषधि है कि जिनको ऐसे कंडीशन में यूज किया जा सकता है। गुरुचि शीतवीर्य होने के साथ साथ ये थोड़ा जो है वो पाचन ये करती है, तो ये थोड़ी जो है उसकी उष्णता है ये धात्वग्नि के पाचन को ये बढ़ाती है, रस के पाचन को, रक्त के पाचन को ये इम्प्रूव करती है। तो रक्त पोषक सार भाग का क्षय होने से बचाना और रक्त पोषक सार भाग उत्पन्न करना ये चिकित्सा के उद्देश्य है, जो कि हर एक प्रकार के हीमोग्लोबिनोपैथीज में ये फिनोमिना जो है ये बनती है। आई एम नॉट गोइंग इन द डिस्कसिंग फर्दर दिस वन, आई एम ओनली हाईलाइटिंग दैट द फॉल्टी हीमोग्लोबिन चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिकलिंग ऑफ द आरबीसीज। और किसके कारण ये हो सकते हैं, तो ये फंडामेंटली हमारे पास जो 2 डिस्क्रिप्शन है, यस्य यस्य ही अवयव बीजे बीज भागे इवा दोषाः प्रकोपमापद्यन्ते तम तम अवयवम विकृतिर आविशति, और उसका जो है ये कारण मैंने ऊपर जो है लिखा है। तो ये संतान दोष ये विरुद्धाहार के कारण ये उत्पन्न होते हैं। तो ये चिकित्सा में भी उपयोगी है, शायद ये हम एक जनरेशन में नहीं कर पाएंगे। अगर हम हेल्दी डाइट का यूज कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन ये टॉवर्ड्स हेल्दी प्रोजेनी की तरफ ये हो, पर वी नीड टू गो विथ दी हेल्दी डाइट, हेल्दी रेजिम
so that we can improve that one. It may take at least 21 century to get it visible, manifest. तो ये ऑलरेडी जो है ये रक्त की दुष्टि के साथ और आम के साथ है, तो आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ दिस वन, आई एम जस्ट कीपिंग दिस स्लाइड. नाउ कमिंग ऑन टू द मैनेजमेंट, एक्चुअली वी वांट टू give the people aware about the options that Ayurveda can provide. So what are the possible options that Ayurveda can provide? First of all, to create the awareness. For what? Pre-marriage counseling. जहां तक हो सके ऐसे जो है जिनको जो है वो माइनर कैरियर या फिर कैरियर्स है, उनको जो है वो कैरियर्स के साथ जो है ये विवाह को डिस्करेज करना. अगर मान लीजिए अगर शादी हो गई है तो उनके लिए जो है वो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट, गर्भ संस्कार में एक ये तरीका है कि जहां पर इनको हम रिकवर कर सकते हैं. नाउ आई वुड शेयर some clinical experiences of my grandfather, दादाजी डॉक्टर सीपी शुक्ला जी के, जो उन्होंने उनके अनुभव में रहे हैं. उन्होंने गर्भ संस्कार का उपयोग प्रजास्थापन गण की औषधियों का यूज करके किया था और उनमें उन्होंने हीमोग्लोबिनोपैथीज में अच्छी खासी जो है वो रिकवरी देखी थी. तो हेल्दी प्रोजेनी जो है ये हुई थी. एक केस जो है उनके पास आया था भीलवाड़ा राजस्थान से, और उनको जो है वो हैबिचुअल एबॉर्शन और करीब तीन बच्चे जो है ये थैलेसीमिया मेजर में उनकी जो है वो डेथ हो गई थी. दे कंसल्टेड दादाजी और उन्होंने जो है ये प्रजास्थापन योग उनको दिया. दी नॉर्मल बेबी बॉय चाइल्ड उनको जो है ये हुआ, एंड with the normal fetal hemoglobin, no thalassemia traces. Now, during the next conception, ये जो दादाजी फॉरेन टूर में थे और उस समय उन्होंने जो है ये मेडिसिन नहीं ली थी. Once again, that child developed thalassemia and passed away. In the fifth conception, the same medicines were given and the patient was recovered. Similarly, उनका जो है वो एक्सपीरियंस पैरोसाइटोसिस के ऊपर भी जो है ये रहा है, जहां पर सोडियम डिप्लीशन के कारण आरबीसीज बिकम स्फेरिकल. सिमिलरली उन्होंने जो है ये सिडरोब्लास्ट एनीमिया में भी ये एक्सपीरियंस किया था. द पर्सन हु इज हैविंग दैट, एंड उनको मेडिसिन दी. द बॉय चाइल्ड दैट डिलीवर्ड वाज हैविंग द नॉर्मल hemoglobin. And he has also treated some of the cases of sickle cell anemia. तो जो गर्भ संस्कार की बात है वहां पर जेनेटिक चेंजेस कितने हो रहे हैं, दैट वी नीड टू वर्क आउट. वी डोंट हैव दैट एनालिटिकल मींस, बट कोरियन बायोप्सी उस समय तक जो है ये पॉपुलर नहीं थी इंडिया में, और इवन आज भी जो है वो कोरियन बायोप्सी जो है वो रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो इसकी हम वर्क नहीं कर सकते. But गर्भ संस्कार is a method by which we can promote a good progeny, healthy progeny. Similarly, मासानुमासिक संस्कार, अगर गर्भ संस्कार नहीं हुए, प्लानिंग नहीं हुई, then we can go with the मासानुमासिक क्रम for the healthy development. Now coming on to the management of the disease, मेरे पूर्व वक्ता ने इन पर जो है ये काफी सारी जो है ये चर्चा रखी थी कि how we can improve the or restrict the occlusive changes. तो यहाँ पर जो है ये आरबीसी लाइफ साइकिल को अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो that will help in reducing the problems that are arising due to anemia. जो नॉर्मल लाइफ स्पैन आरबीसी का है वो 120 दिन का है, जबकि हीमोग्लोबिनोपैथीज में that is drastically reduced. And the use of the holistic medicine can improve the RBC life cycle. So this is the one way how we can improve the quality of life. And second one is to manage the anemia. अगर patient को normal hemoglobin ये हम maintain कर रहे हैं, then the patient will have the minimum symptom due to the disease. Now we need a long-term management. This bears a high risk of developing complication.
एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, हार्ट सिंड्रोम है, एवास्कुलर नेक्रोसिस है, ओक्लूसिव चेंजेस है, और उसके कारण जो है ये मैक्रो एंड माइक्रो एंजियोपैथी और उसके रिलेटेड जो है ये कॉम्प्लिकेशन ये होते हैं। तो वी नीड टू प्रिवेंट दैट कॉम्प्लिकेशन विद द यूज ऑफ some medicine and rasayan, healthy diet, rasayan. Basti is one of the important mean for long-term management and also for a good progeny. I've just highlighted one thing. This is reference for Basti from Charak. Narinam aprajatanam naranam च अपि अपत्यदा। तो अपत्य जो है ये अपत्यदायक यापन बस्ती जो है इनका उपयोग जो है ये कर सकते हैं फॉर अ बेटर प्रोजेनी। बिफोर प्लानिंग फॉर कंसेप्शन वन कैन गो विथ द प्यूरिफिकेशन थेरेपी पंचकर्म में, या फिर बस्ती थेरेपी के साथ जो ऐसे रिस्क पर है ये करके शोधन करके फिर उत्तर बस्ती दे करके इनके लिए जो है हम अपत्य जो है ऐसा प्लानिंग फॉर बेबी हम अच्छी तरह से जो है ये कर सकते हैं। This is the holistic approach of management in Ayurveda, and with his blessing I am able to share some of the views. I am dedicating this to my mentor, grandfather. Thank you very much, sir. अगर कोई सवाल है तो मैं उसका जो है प्रयत्न करूंगा कि उत्तर दे पाऊं। थैंक यू वेरी मच सर। अस्तु। बहुत ही अच्छा निशान जी, आपने बहुत ही अच्छा समझाया और सभी कुछ क्लियर हुआ सिकल सेल के बारे में। आज हम लोगों को दोनों ही वक्ता, आप लोगों को नमन है, दोनों को नमन है। वाह निशान, एक्सीलेंट सर एक सेकंड। हाँ बिल्कुल। एक केस की थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा। ये एवास्कुलर नेक्रोसिस क्या केस था ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया। मेरे पास कुछ एक 5 केसेस मैंने जो है ये एवास्कुलर नेक्रोसिस के ट्रीट किए हैं और ऑस्टियो नेक्रोसिस के भी मैंने ट्रीट किए। ऑस्टियो नेक्रोसिस जो है ये हेड ऑफ फीमर को छोड़ करके जहां पर ये ओक्लूसिव चेंजेस हो रहे हैं वहां पर ये देखने को मिलता है, वहां पर इस टर्म को यूज किया जाता है। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस में रिकवरी जो है, क्लिनिकल रिकवरी के साथ साथ रेडिएशन में भी रिकवरी, जो रेडियोलॉजिकल स्टडीज में भी रिकवरी जो है ये देखने को मिली थी मुझे। ये इम्प्रूवमेंट जो है वो करीब करीब 10% तक का जो है ये ऑब्जर्व हुआ था। ये एक आदिवासी महिला थी अहमदाबाद के, ये बेसिकली आवा के पास की थी और अहमदाबाद में ये रहती थी और अहमदाबाद में मैंने उनको जो है ये देखा था और करीब 1 साल उनको जो है मैंने ये ट्रीटमेंट दिया था। और उसमें मेनली जो है मैंने धात्री लोगों के साथ रक्त शोधक मंजिष्ठा गण का जो है मैंने उपयोग किया था। तो ये लघु मंजिष्ठाधिक्वात की टैबलेट मैंने जो है वो बनाई है और उनका जो है ये इस प्रकार के डिसीजेस में मैं यूज करता हूँ एंड इट इज हैविंग ए गुड पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इन सच केसेस। दिस एडेड इंफॉर्मेशन, ये मेरी बात एक छूट गई थी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी दिस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी। आप म्यूट है अग्निहोत्री सर। अरे नहीं, हम अनम्यूट है, अनम्यूट किया हमने, नहीं आ रही आवाज? आ रही है अब आ रही है सर। ठीक है, थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी एंड थैंक यू प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी। बहुत ही ब्रीफ, हम तो यही लग रहा था कहीं आप गहराई में चले गए, तो बहुत गहरी डिजीज है, लंबा खींचेगा। 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण आई। एक तो गुरुदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा से है और उसका परिणाम ये मिला कि आप वो इतिहास पुरुष हैं जिन्होंने ये मैंने सूचना दी प्रॉपर फाइनल ट्रीटमेंट के साथ में कि प्रजा स्थापन योग के द्वारा अगली संतति पर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया कि आराम से संतति जो है विदाउट सिकल सेल एनीमिया के कॉम्प्लिकेशन से उत्पन्न हुई और स्वस्थ है। तो ये प्रयोग धर्मी ही नहीं
पीयूष पाणी और ईश्वर से प्रदत्त आशीर्वाद की ही कृपा के द्वारा ये संभव होता था। ये उनके उनके नाम के संग उनका ये समझिए विशिष्टता जुड़ी हुई थी और आप उसके असली उत्तराधिकारी हैं। और हम इस बहाने IRES के लोग आपके जरिए इस उत्तराधिकार का प्रसाद भी प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही खुशी हुई। यदि ये संभव है तो बताइए कहाँ एक तरफ मॉडर्न मेडिसिन का सो कॉल्ड एडवांस होना और कहाँ हमारा वास्तविक तबके की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और उसके विशोधन के बल पर, तो उसको विशोधन कहेंगे, विशोधन के बल पर अगली पीढ़ी को वो स्वर्णिम आशीर्वाद प्राप्त करा देना, ये मिरेकल नहीं, ये वास्तविकता थी। ये अलग बात है कि हम उस किसी आधुनिकता में खो गए और वो चीज नहीं पढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से बताया, संक्षिप्त हमारी राजीव नई। जी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं शायद। अच्छा राजीव जी। ये प्रकाश। हाँ, मुझे एक सर से अभी का जो प्रेजेंटेशन हुआ ना, उसके जो अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड, फीमर हेड वगैरह जो बोले, तो रेडियोलॉजिकल कैसा सेंटीग्राफी किया था कि कैसा किया था? ऐसा एक मेरा क्यूरियोसिटी बोल के क्वेश्चन है।